So this is a set of 7-8 questions. Try to do them. So you have to match list one with list two. There is a book which is given, and author is also given. So theory of moral sentiments. Okay, theory of surplus value. Karl Marx. This I know. General theory is given by Keynes. On liberty, I think it is written by uh, J.S. Mill. So this one would have been by uh, Adam Smith. So 3412. 3412. Fourth. Arrange the following events in chronological order. New economic policy. It's sometime, it happened in 1991, right? Drain of wealth, I think somewhere in 1870, this book came where he proposed the theory, the other by Naroji. White Revolution, somewhere around 1970. And Monopolies Inquiry Commission was before MRTP Act passed. MRTP Act was passed in 1969. So this must be before than that, right? So in chronological order, may so first came Drain of Wealth, B, then I think this would be before 1970, no? So let's say it is 1965. So B, D, C, A. Higher aggregate demand may lead to demand pull inflation. That's true. Yes, because when the aggregate demand is going to increase, prices are going to increase. This is demand pull inflation. Higher cost of production will lead to cost push inflation. That's right. Higher international food and fuel prices may lead to inflation. Yes, it is true. Higher indirect taxes will lead to inflation. Yes. Lower subsidy will lead to inflation. Is सब तो true है. So it is all A, B, C, D are correct. Arrange the following rates in ascending order. So repo rate is the one at which the RBI is lending to commercial banks, right? Lending rate is the rate which the commercial banks are charging their customers on loans. तो ये तो सबसे हाई होना ही चाहिए, ठीक है? Deposit rate is the rate which the commercial banks are giving to the depositors because they are depositing it with commercial banks. So that is deposit rate. Reverse repo rate is when RBI is borrowing from commercial bank, right? That is reverse repo rate. तो जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक से बोरो कर रहा होगा वो सबसे कम वाला रेट होगा, राइट? सो इट विल बी डी. फिर जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को रेट दे रहा लेंड कर रहा होगा वो उससे ज्यादा होगा रेपो रेट. फिर जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स अपने डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट दे रहे होंगे वो डिपॉजिट रेट होगा, वो इससे ज्यादा होगा. एंड जो रेट कमर्शियल बैंक्स अपने बोरोअर से चार्ज कर रहे होंगे फॉर लोन्स वो सबसे ज्यादा होगा. सो डी सी ए बी, सॉरी डी ए सी बी, डी ए सी बी, राइट. Which statutory body determines the criteria for tax devolution for the divisible pool to the states of India? So this Finance Commission of India is going to decide. वो एक फॉर्मूला निकालते हैं जिससे दिस इज बीइंग डिसाइडेड दैट हाउ द टैक्स इज गोइंग टू बी डिवॉल्व टू द स्टेट्स. डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया हैं, डिफरेंट वेट्स हैं फॉर द डिफरेंट क्राइटेरिया, एंड देन डिपेंडिंग ऑन दैट इट इज गिवन to the different states. What would be the slope of the LM curve in the interest income plane if the interest rate is exogenously determined? LM curve RY plane में ड्रॉ होता है. अगर इंटरेस्ट रेट पहले से ही फिक्स्ड है सो आर में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो एलएम कर्व हॉरिजॉन्टल बन जाएगा, राइट? What would be the slope of the labor supply curve if there is a large scale involuntary unemployment in the economy? If wage rate is measured along the vertical axis and labor supply is measured along the horizontal axis. अगर लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसका मतलब है कि जो बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर वो बहुत कम है, वो उस गिवन वेज रेट पे कितना मर्जी लेबर सप्लाई करने को तैयार है. सो लेबर सप्लाई कर्व वुड बी हॉरिजॉन्टल एट द गिवन वेज रेट अगर लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट.
राइट, तब तो वेज कम ही होगी ना, और वो गिवन वेज है। हाँ, तो उस पे दे आर विलिंग टू सप्लाई एज मच लेबर एज दे कुड, सो लेबर सप्लाई इज हॉरिजॉन्टल इन दैट केस। टैक्स हॉलीडेज इन कैश ग्रांट्स, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट सब्सिडीज, कि आप इतने, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए, इतने सालों तक आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको हम कैश ग्रांट्स दे रहे हैं, तो सब्सिडीज ही तो हैं, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ सब्सिडीज। What would happen to the rate of interest in the new equilibrium if the money supply rises in the Mundell-Fleming model under flexible exchange rate and absolute free capital mobility, means full capital mobility, perfect capital mobility, if the international rate remains same, अगर international rate same है, and ultimately R तो R star पे वापस आता ही है इसमें in case of perfect capital mobility, तो rate of interest में तो कोई change नहीं होने वाला, it would remain constant, there won't be any change in the rate of interest then. Then, if the expected if the expected rate of return from investment projects in India be 10% per annum, and if the exchange rate becomes rupees 88 per USD from rupees 80 per USD in 1 year, तो पहले 80 rupees per dollar था, अब 88 rupees per dollar है. What would be the expected amount of the profit in terms of US dollar from an investment project of 100 million USD in India from the point of view of an investor in US? अब एक बात बताओ, इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग हाउ मच, $100 million इन इंडिया, राइट? सो अगर इनिशियल एक्सचेंज रेट देखें तो ये था, सो इट मींस 8,000 crores INR, ये इन्वेस्टमेंट थी, राइट? अब अगर 10%, if the expected rate of return from the investment project is 10%, so 8,000 crores कितना, एक साल बाद कितना मिल जाएगा 10% पे, सो 10% ऑफ 8,000 crores will be what? So 800 plus 8,000, 8,800 crores INR, ये मिलेगा। लेकिन जब इसको तुम वापस कन्वर्ट करोगे 88 यूएस पर डॉलर में, डॉलर के अंदर, तो क्या होगा? सो 8800 crores INR, and the new exchange rate is what? 88 rupees per dollar, तो ये कितना आ जाएगा? This is going to come out to be 100 million USD. So you started with 100 million USD. You ended up after 1 year at 100 million USD only, right? So कितना profit है? Zero. कितना profit है यहाँ पे? Zero. You with me? Hmm? Okay. So this is what I want to do in this recording. Thank you, beta.